अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कंप्यूटर के 3 अहम प्रोग्राम्स MS पावर पॉइंट, MS वर्ड और MS एक्सेल में इस्तेमाल होने वाली कॉमन शॉर्टकट कीज़ को आसान और समझने वाले तरीके से स्टडी करेंगे। तो चलें बगैर वक्त ज़ाये किए वीडियो का आगाज़ करते हैं। Which of the following shortcut key is used to copy the selected text or object? The right answer is Ctrl+C. The shortcut key Ctrl+X performs which operation? The right answer is cut. Which shortcut key is used to paste, copied or cut data? The right answer is Ctrl+V. Pressing Ctrl+A will undo the last action, select all the contents, print the document, close the application. The right answer is select all the contents. The function of Ctrl+Z is to undo the last action. Which of the following shortcut keys is used to redo an action? The right answer is Ctrl+Y. Ctrl+I applies which formatting style? The right answer is option B, italic. To make the selected text bold, which shortcut key is used? The right answer is option B, Ctrl+B. The shortcut key Ctrl+U is used for? The right answer is option A, underline text. To find text within a document, which shortcut key is used? The right answer is option B, Ctrl+F. The shortcut for the replace function is? The right answer is option C, Ctrl+H. Which shortcut key is used to print a document? The right answer is option A, Ctrl+P. To save changes made to a document, which shortcut key is used? The right answer is option B, Ctrl+S. The shortcut key Ctrl+O is used to? The right answer is option B, open an existing document. Which shortcut is used to create a new document or file? The right answer is option B, Ctrl+N. The shortcut key Ctrl+W is used to? The right answer is option C, close the current document. Which key deletes the character to the left of the cursor? The right answer is option A, backspace. Which key deletes the character to the right of the cursor? The right answer is option B, delete key. Which key selects one character to the left? The right answer is option B, shift plus left arrow. Which keys select one character to the right? The right answer is option D, shift plus right arrow. Which shortcut key is used to move the cursor to the beginning of the current line, first cell of the current row, or beginning of the current text line within a text box or placeholder? The right answer is option A, home key. तो स्टूडेंट्स, ये थी MS पावर पॉइंट, MS वर्ड और MS एक्सेल की अहम और कॉमन शॉर्टकट कीज़ जो आपके कंप्यूटर स्किल्स को बहुत बेहतर बना सकती हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो मुफीद लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फौरी पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और दूसरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।